Hello friends, welcome and good afternoon. Welcome to my channel JPSC for you. So, we are preparing for JPSC, BPSC और स्टेट PCS एग्ज़ाम्स. सो JPSC का भी सेपरेट वीडियो चल रहा है और फॉर पेपर 1 हम इंडियन पॉलिटी से शुरू किए हैं. सो इंडियन पॉलिटी में हमने आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स देखा था लास्ट वीडियो में. आज हम प्रीएम्बल शुरू करते हैं और प्रीएम्बल के क्वेश्चंस करते हैं. तो प्रीएम्बल क्या है, वो यही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, यही हमारे प्रीएम्बल में भी लिखा है. बस इसी को एज ए क्वेश्चन पूछा है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. सो हेयर क्वेश्चन गो विद क्वेश्चन नंबर 1. In the following quotation, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this Acts do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Now, Acts stands for. तो ये पूरा प्रीएम्बल है और इसमें एक्स एक एम्प्टी प्लेस है. तो व्हाट दैट फिल्स. ऑप्शन ए 26 डे ऑफ जनवरी 1950, 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 day of January 1949 and none of the above. So as we know Constitution Day हम मनाते हैं 26 day of November 1949. So for this correct answer will be option B. Now question number 2. The details यहाँ दिया हुआ. The Indian Constitution starts with the preamble which outlines the main objectives of the Constitution. The preamble describes the nature, objectives and ideals of Indian political system. It also contains a date on which the constitution was adopted, that is 26 November 1949. The term stands for the adoption date. Now question number 2. What was the exact constitutional status of the Indian Republic on 26 January 1950 when the constitution came into force? A democratic republic, a sovereign democratic republic, a sovereign secular democratic republic, a sovereign socialist secular democratic republic. तो जब 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उस समय उसका स्टेटस था ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. और जो सेक्युलर और सोशलिस्ट टर्म्स है ये 42nd अमेंडमेंट में बाद में ऐड हुआ था. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. डिटेल्स देखते हैं. Constitution of India came into force in 26 January 1950. The exact constitutional status on 26 January 1950 was a sovereign democratic republic. SDR ऐसे याद रख सकता है. The word socialist, secular and integrity were added by 42nd Amendment of the Constitution in 1976. Now next question. By which name is our country mentioned in the Constitution? Option A भारत एंड इंडिया, भारत ओनली, हिंदुस्तान एंड इंडिया, भारत, हिंदुस्तान एंड इंडिया. सो ऐसा था कि कोई एक यूनानिमस डिसीजन नहीं हो पा रहा था कि सर्टेन पीपल्स वर सेइंग कि भारत नाम होना चाहिए, कुछ बोल रहे थे कि इंडिया होना चाहिए. तो हमारा जो संविधान है उसमें ऐसा लिखा है भारत, दैट इज़ इंडिया. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. There was no unanimity in the Constituent Assembly about the name of the country. Some members suggested the name traditional name Bharat, while others advocated the modern name India. Hence, the Constitution of India contains both. According to Article 1, India, that is Bharat, shall be a union of states. So, India, that is Bharat, ये Constitution में ऐसा लिखा हुआ. Now, question number 4. The context of the preamble of Indian Constitution, which of the following sequence is correct? Republic, peoples, democratic, secular, socialist, universal, sovereign. Sovereign, socialist, democratic, peoples, secular, republic.
सोवरेन डेमो सोशलिस्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये क्वेश्चन से एक चीज़ का इम्पोर्टेंस मालूम पड़ता है कि प्रीएम्बल याद भी होना इम्पोर्टेंट है। मतलब आप देख रहे हैं कि इसमें सीक्वेंस पूछा है कि कैसे लिखा हुआ है प्रीएम्बल में। तो ऑब्वियसली अगर आप पहला क्वेश्चन ध्यान से देंगे तो उसमें लिखा हुआ है सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगर शॉर्ट में याद करना है तो SSS पहले SDR था 1950 में, उसके बाद सेक्युलर और सोशलिस्ट ऐड हुआ बीच में बाद में, तो अभी ये SSSDR। तो डिटेल्स में है द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic. The word peoples is not mentioned in the preamble of the constitution. This particular word has been mentioned in the constitution of China. तो वहाँ देखेंगे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC है वहाँ। इंडिया में पीपल्स मेंशन नहीं है प्रीएम्बल में। द क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सोवरेन सेक्युलर, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एज गिवन इन द प्रीएम्बल। सो लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। तो पहले क्या है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक, SSS तीनों साथ में ही है, बट उसमें भी कौन सा है वो याद रखना है। तो सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो ऑप्शन CADB, ऑप्शन A विल बी द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट। तो ये लास्ट क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा, सोशलिस्ट और सेक्युलर जो था वो 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 1 and 3, सो ऑप्शन B विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following describes India as a secular state? Secular state क्या डिफाइन करता है? फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, 9th शेड्यूल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सो अभी हमने देखा इट्स द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द preamble of the Indian Constitution in 1975? Fraternity, sovereign, equality, integrity. The word integrity was not in the Constitution at the time of commencement. It was added in 1976 by 42nd Amendment. So, option D. In which form is India declared in the preamble of the Constitution? तो अभी हमने देखा है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, SSS सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो आंसर विल बी C। ये जो ऑप्शन ए है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये 1950 में था, बट अभी हम इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ऐड होके ये सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऐसा मेंशन किया हुआ है प्रीएम्बल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, consider the following statement in regard to the preamble of Constitution and give correct answer using the code given below. The objective resolution of Jawaharlal Nehru finally become preamble. It is not justiciable. It can't be amended. Preamble cannot override the specific provisions of the Constitution. तो इसमें क्या पूछा है, और give the correct answer. सो आंसर हो जाएगा तो जो जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था वही जाके फाइनली फिर एज ए प्रीएम्बल बना। तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था जवाहरलाल नेहरू ने इन दिसंबर 1946, उसको ही फिर 1947 में एज ए प्रीएम्बल लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये दिस इज़ नॉट जस्टिसेबल, मतलब ये कोर्ट में जस्टिसेबल नहीं है, आप इसके बेसिस पे केस नहीं कर सकते। एंड प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑप्शन B इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ इसके डिटेल्स देख लेते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।
The objective resolution moved by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946 was unanimously adopted by the Constituent Assembly as the preamble of the Constitution on 22nd January 1947. इन द केशवानंद भारती, मालूम है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था केशवानंद भारती, और अभी हाल ही में केशवानंद भारती जी का डेथ भी हो गया लास्ट मंथ में आई थिंक. In the case of Keshwanand Bharati, the Supreme Court held that the fundamental rights, like other parts of the Constitution, were subjected to the amendment by Parliament, provided the amendment do not destroy the basic structure of the Constitution, as stated in the principle. मतलब कि फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड हो सकता है बशर्ते कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए. It is notable that it is not justiciable, that is, its provisions can't be enforced in a court of law. It cannot override the provisions of the Constitution. So, in the above statement, 1, 2 and 4 are correct. Now, question 11. The preamble of the Constitution was amendment by, so हमने देखा it's amendment by 42nd Amendment Act, जिसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया विथ इंटीग्रिटी. In 1976, the preamble to the Constitution was modified by the 42nd Amendment. The characterization of India as sovereign democratic republic changed to sovereign socialist secular democratic republic. The words unity of the nation was changed to unity and integrity of the nation. Now question number 12. The term socialist was added in the preamble by, again the same question is by 42nd Amendment. The term socialist was brought into the preamble of the Indian Constitution by which amendment? 42nd Amendment. Option B. Question 40. In the preamble of Constitution adopted on 26 November 1949, which words were not present? तो 1949 में हम देख रहे हैं socialist, integral, secular was not present. 1, 2 and 3. So option A will be the correct answer. Option A. Now question number 15. The words socialist and secular were inserted in the preamble to the Constitution by 42nd Amendment. तो घटना चक्र में क्या इतनी बार रिपीट हो जाता है क्वेश्चन कि आप एक घटना चक्र एक बार दो बार अच्छे से पढ़ लो तो पीटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है ये. The word secularism was inserted in the preamble of the Indian Constitution by 42nd Amendment 1976. That's why it's called the mini constitution. Now, the goal of constitution is to assure for all its citizens justice, social and economic, liberty of thought and expression, equality of opportunity, dignity of the individual. So if you remember the first question, उसमें ये सारा कुछ मेंशन किया हुआ है. So 1, 2, 3, 4 all are correct. So option D will be the correct answer. Now, the preamble embodies the basic philosophy and fundamental values on which the Constitution is based. The preamble is aimed to secure all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and unity, and integrity of the nation. Now, question number 18. India is a republic means it is the people who are the final authority in all matters. There is no parliamentary system of government in India. There is no hereditary rulers in India. India is union of states. So republic means कि जो राज्य का हेड होगा वो निश्चित होगा, मतलब चुना हुआ रहेगा. ऐसा नहीं कि हेरिडिटरी जैसे कि ब्रिटेन में चलता है राजा का प्रथा अभी भी चल रहा है, जो हमारे पहले चलता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो अभी ऐसा नहीं है. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर.
Republic means a state in which supreme power is held by the people and the head of the state is elected by the people through election. In case the head of the state is elected by indirect election, that is through elected representatives, and India is a republic. And who is the head of the state? It is the President of India. Question number 90. India has people's sovereignty because the preamble of the Constitution begins with the words. So preamble क्या था? Democratic India, Republic of India, Democracy of People, We the People of India. So preamble का पहला वर्ड क्या था? We the People of India. तो इन बेसिक अगर आप preamble याद कर लेंगे तो preamble से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे, बिकॉज सारे क्वेश्चंस उसमें से ही है. The preamble to the Constitution starts with the words "We the people of India." These words indicate the sovereignty of people or citizens of India. It means that peoples of India are not governed by any external power but are directed by the Constitution. Now question number 20. Where have the words "We the people of India" has been used in the Constitution of India? So without wasting any time, we know it's in the preamble of the Constitution. Question 21. All persons completely and equally are human. This principle is known as universalism, holism, socialism, interactionism. So it's known as universalism. All persons completely and equally are human. This principle is known as universalism. According to this principle, every person is entitled to human rights without any discrimination among them. सभी एक समान है, without any discrimination. Now question number 22. Which among the following is the correct expression of the term secular in India? India has many religions, बहुत सारे religion है. Indians have religious freedom. यहाँ पे है रिलीजन का फ्रीडम, कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म की पूजा कर. फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल. देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया. सो जो सेक्युलर कहलाने का मेन रीज़न है दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज दो देयर इज़ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया. इंडिया में किसी स्टेट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है कि ये स्टेट हिंदू है, ये स्टेट मुस्लिम है. जैसे आप नेपाल में देखते हैं, नेपाल में हिंदू, बट इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री एंड एवरी स्टेट हैज़ मेंटेन्ड इज सेक्युलरिज्म. कोई स्टेट एक पर्टिकुलर रीजन को लेके रिलीजन को लेके नहीं चलता है. Now question number 23. Which of the following words is not in the preamble to the Constitution of India? Socialist, secular, sovereign, public welfare. So it's option D. हम तभी से यही पढ़ रहे हैं. Which of the following liberty is not embodied in the preamble of the Constitution? Liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief, economic liberty. So economic liberty वो नहीं है. The preamble of the Constitution of India embodies the liberty of thought, expression, belief, faith and worship but does not include economic liberty. Now question number 25. Which among the following is not mentioned in the preamble of the Constitution of India? Social justice, economic justice, political justice, religious justice. So preamble में लिखा हुआ है सारी चीज़ें, but religious justice is not mentioned in the preamble. The preamble of the Constitution of India mentions justice, social, economic and political, where the word religious justice is not present in the preamble. Question 26. Which one of the following objective is not embodied in the preamble of the Constitution of India? Liberty of thought, economic liberty, liberty of expression, liberty of belief. So ऊपर के क्वेश्चन में देखा इट्स economic liberty. The explanation. The preamble of the Constitution of India aims to secure to all its citizens liberty of thought, expression, belief, faith and worship, besides social, economic and political justice and equality of status and opportunity. That is, it is clear that economic liberty is not included in the preamble of the Indian Constitution. Question number 27. Which of the following is true in relation to the preamble of Constitution of India? So इसमें से कौन सा
सही है, ट्रू पूछा। So let's check the options. The words socialist and secular were not the part of the preamble on the enforcement of Constitution in 1950. The above mentioned words were inserted in 1977. ये तो नहीं होगा. The above mentioned words were inserted in 1985. ये भी नहीं होगा. These two words are not in the part of preamble. So as we know, these two words are part of preambles. Option A will be the correct option. So I don't think फिर से हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है. We will move to question number 28. Which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Constitution? So इसमें question that is the preamble. ये इसका explanation थोड़ा important है, तो वो हम अच्छे से पढ़ेंगे. तो द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने. ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी डिफाइंड द प्रीएम्बल एज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन democratic republic. Subhash Kashyap has mentioned that if constitution is the body, then preamble is the soul. If the preamble is a foundation, then constitution is structure or building standing on it. और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अगर ये मेंशन रहेगा कि व्हाट बाबा साहब अम्बेडकर है सेट, तो फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विल सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. इसमें सिर्फ सोल पूछा कि व्हाट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Who among the following called the preamble of Indian Constitution the horoscope of our sovereign democratic and republic? So it mentioned in the earlier question, it's K.M. Munshi. Who has termed Constitution a sacred document? B.R. Ambedkar, Mahatma Gandhi, Deen Dayal Upadhyay, Muhammad Ali Jinnah. So Dr. B.R. Ambedkar. Bhimrao Ambedkar in 1947 became the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly of India. Ambedkar was a staunch constitutionalist. He believed that a government must be constitutional and that constitution must be treated as basic and sacred document. Question number 31. In which of the following cases Supreme Court held that the preamble forms part of the Constitution? Union of India versus Dr. Kohli, Banarsi Das versus State of UP, Bommai versus Union of India, and Malak Singh versus State of Punjab. So first we'll see the option C. और इसका explanation भी बहुत important है. In the case of S.R. Bommai versus Union of India, 1994, the Supreme Court held that the preamble is an integral part of the Constitution. In the case of Keshwanand Bharti versus the State of Kerala, 1973, a bench of 13 judges of Supreme Court recognized preamble as the basic structure of the Constitution. Now question 32. In which of the following cases the Supreme Court regarded preamble as a part of the basic structure of Constitution? So in Keshwanand Bharti case, Supreme Court ने preamble को as a basic structure of Constitution माना था. 33. Economic justice as one of the objectives of the Indian Constitution has been provoked in Preamble and Fundamental Rights, Preamble and the DPSP, Directive Principles of State Policy, the Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy, none of the above. No. The Preamble explicitly provides for economic justice as an objective of Indian Constitution. The part of Directive Principles of State Policy, on the other hand, contains several articles which provide for economic justice. Article 38(1) says the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may be a social order in which
in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life। मतलब ये DPSP में भी और प्रियम्बल में भी इकोनॉमिक जस्टिस मेंशन किया हुआ है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 34, question number 34, the ideals and objectives outlined in the preamble of the Indian Constitution have been further elaborated in the chapter on fundamental rights, the chapter on DPSP, the chapter on directive principles of state policy, fundamental rights and fundamental duties, nowhere else in the text of the Constitution। Option C, we'll see the details। The main objective of the Constitution is to secure justice, social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status and opportunity to all its citizens। The advancement of the people should not be a barrier to the advancement of the nation। So the promotion of fraternity is also aimed in the Constitution। The ideals and objectives outlined by the preamble are included in the chapter related to fundamental rights, directive principles and fundamental duties। The question 35. The mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? So it's reflected in the preamble, sorry। उस समय उनके क्या विचारधारा थे वो उनसे मालूम पड़ता है कि फ्रॉम दैट टाइम एट 47 और ओनली उन्होंने इक्वालिटी, सोवर्निटी, सेक्युलरिज्म, इतना कुछ, सॉरी सेक्युलरिज्म नहीं था बट रिपब्लिक, इतना कुछ उन्होंने उनके माइंड में था जिसके बेसिस पे उन्होंने प्रेमबल लिखा था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? So it's in the objectives reflected in the preamble of the constitution। मतलब उसके बेसिस, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव हो, अगर प्रीएम्बल एक सोल बोल सकते हैं जैसा उन्होंने कहा है, और उसके सारांश में फिर संविधान को बनाया गया है प्रीएम्बल को ध्यान में रखते हुए। हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस हैज़ बीन enshrined इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 2, 3, 1, 4। So guys, there are 3 types of justice mentioned in the preamble of the Indian Constitution। The preamble aims to ensure justice, social, economical and political। So option B is the correct answer। The preamble given in the Constitution is not enforceable in courts, right, is important and have utility, describes the aim of governance, helps to give a judicial meaning to our Constitution। So all the options are correct। The preamble given in the Constitution is not enforceable in a court of law। It is notable that the preamble is amendable and has been amended only once in 1976 by 42nd Constitutional Amendment। So all the options are correct। Now is question 39। One of the implications of equality in society is the absence of privilege restraints competition ideology। So ऑप्शन है, और ये क्यों है यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज लार्जली कन्फाइंड टू द टेस्ट ऑफ इरेडिकेटिंग स्पेशल प्रिविलेज। मतलब किसी को कुछ खास भेदभाव के बिना किसी को कुछ प्रिविलेज नहीं। दिस वॉज एविडेंट इन द फैक्ट दैट कॉल्स फॉर फॉर्मल इक्वालिटी were first made in the hope of breaking down the hierarchy of ranks and orders which had survived from feudal times। Privileges granted
to one class of person on grounds of gender, color, creed, or religion are widely regarded as irrational prejudices which falls contrary to the principle of equality. मतलब किसी का रंग, भेद, जाति देखकर ऊंचा नीचा जो पहले चलता था समाज में, तो दैट डज नॉट डिफाइंस द principle of equality. Which of the following is correct? So I think this is the last question. Social equality is not guaranteed in our constitution. Social equality already existed in our country. Social equality is guaranteed in our constitution. preamble में हमने देखा social justice and equality के बीच, तो social equality is guaranteed in our constitution. Social equality has been guaranteed in our constitution under article 14 to 18 in right to equality. The preamble to the constitution also aims to ensure social equality. So with this question हम लोग preamble का पार्ट ख़त्म करते हैं और preamble के बाद हमारा अगला तो टॉपिक रहेगा वो है गवर्नेंस सिस्टम का. So slowly we will cover up the Indian polity part. फिर हम टाइम मिलेगा तो we'll start with Indian geography, Indian history also. So okay friends, that's all for me tonight. Have a great day. So please like the video and subscribe the channel. Till then, good day. Bye bye. Jai Hind.